Okay, welcome back again in the Revit introduction part, right? So in the last lecture, we have started with Revit. All right, now I'll continue in the Revit introduction as well. And from today onwards, we'll be looking into the tool as well. Like we will be practicing with a Revit application, right? Theoretical part was done in the last lecture only, and I'll be using my PPT to explain you the further activities or maybe how to use the application, right? So I'm just going to share my screen. If it is visible, just let me know, huh? Can you see the PPT? Yes, sir. Yes, sir. Right, so we are pretty much done with the theoretical part, right? I was explaining you about this landing page user interface, right? And then you know these are the already available some sample projects, sample structure project, sample architecture project, family systems, electrical project, right? HVAC project, plumbing, architecture again. So here, if you see, we have open. Open means if you have already existing projects, you can go there in the open tab and then open your projects wherever you have saved your work, right? Let's say you have your project work in D drive or E drive or any other drive or desktop. You directly go to the open and then open your work and start working on that, right? On the other hand, if you want to start a new project, let's say for example, so you have to go to new, right? This is model and project is one and the same thing. Can you see models and project, one and the same thing. Whereas if you talk about families, I told you families are nothing but these are the 3D objects which are already available, ready to use object or shapes. For example, let's say this table, okay, this truss, already available truss, this system family. Okay, there are certain predefined 3D geometries which are available in the Revit library. Let's say you want to use a symbol or a 3D shape of a fridge, okay, in your project. So you can directly go to the library, okay, Autodesk library, and you can use the 3D shape of 3D object of fridge. Moreover, let's say you want to use a symbol or like 3D object of fan, ceiling fan. Okay, you want to use AC, you want to use cabinet like computer or CPU. I mean, almost all the electronics items, gadgets, or electrical items, plumbing items, tap, geyser, washing machine, and kitchen appliances, gas Sir, stove. Hmm. Yes, ask the question if you have, Anurag. नहीं सर इसका मैं बोल रहा था सर, ये मतलब क्या कहते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग की तरह से रहता है ना इसका तो। आई मीन इंटीरियर से रिलेटेड भी एंड you want to use a car. I mean, there are lots of already available families. तो उनको हम family बोलते हैं यहाँ पर Revit में, जैसे जो block बोलते हैं ना, what we call a block in AutoCAD. AutoCAD may you want to use some symbol of a car or a person or a machine. So there you have 2D shapes. Okay, if you want to use a washing machine over there, तो आप क्या है उसका प्लान बना हुआ होगा उस पे, है ना, टॉप व्यू बना हुआ होगा और उसको आप एज अ मशीन बोल के यूज कर लेंगे.
कार का एक शेप बना होगा, दैट इज ऑल्सो अ 2D काइंड ऑफ थिंग. द सेम चीज वी कॉल हियर एज फैमिलीज. ठीक है, फैन की एक फैमिली होगी, ठीक है, टेबल चेयर की एक फैमिली होगी, और फैमिली भी यू हैव डिफरेंट टाइप्स. लाइक फॉर एग्जांपल चेयर्स भी वी हैव लॉट मेनी टाइप्स. कितनी टाइप्स की चेयर्स अवेलेबल है मार्केट में, तो यू विल फाइंड आई मीन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेयर्स. ऐसा नहीं है सिर्फ वन टाइप की चेयर यू विल फाइंड हियर, वन टाइप ऑफ टेबल यू विल फाइंड हियर, वन टाइप ऑफ यू नो फ्रिज, या फिर जो थोड़े टिपिकल शेप्स हैं, फॉर एग्जांपल जेन सेट, जनरेटर सेट और डीजी, या फिर ट्रांसफॉर्मर आपको चाहिए, तो वो भी आपको इसमें रेडिली अवेलेबल मिल जाएगा. राइट, बिकॉज क्रिएटिंग अ फैमिली इज अ वेरी टीडियस वर्क, टीडियस जॉब, टू बी ऑनेस्ट. अगर आपको फैमिली क्रिएट आ जाती है, हम कवर करेंगे, वी विल कवर हियर हाउ टू क्रिएट 3D ज्योमेट्रीज और एनी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री इन Revit. बहुत इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा टफ भी है वो. अगर वो अच्छा से समझ में आता है तो यू कैन क्रिएट एनी टाइप ऑफ कंटेंट. ठीक है, एंड आप अपना कंटेंट भी क्रिएट करके ऑनलाइन अपलोड कर सकते हो. राइट, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज. सो दिस इज नोन एज फैमिली. सो अगेन, ओपन, आपके पास कोई ऑलरेडी, if you are working on any family and you have saved that family, you directly open that family. And if you want to start with a new family, so you can go there. Right, I'm not covering family as of now. We will be focusing on projects. Okay, and we will come back later on this part. Right, don't worry about this. And this is all Autodesk project, my insights. What my insights means, which type of software I'm using, how many type of how many hours I'm using Autodesk projects. This is a kind of you know I think you may explore these things. No, this is nothing but something related to the Revit and all, Autodesk. Right, so now I'll go to my PPT and will share what is inside the PPT. Now, the very, very interesting thing is that now onwards, you are not supposed to say that Revit is BIM. If somebody is going to ask you कि BIM क्या होता है, BIM कोर्स किया है क्या आपने, हाँ मैंने किया है, हाँ मैंने मेरे को BIM Revit आता है, don't say like that. If somebody is saying that BIM Revit होता है, या फिर Revit BIM की बात करते हुए if somebody is talking about यार हाँ मुझे Revit आता है, तो that means he or she doesn't know about anything about BIM. ठीक है, BIM एक प्रोसेस है पूरा, which involves planning, design, construction, operation and maintenance throughout the life cycle of a project. However, Revit जो है वो एक टूल है. Revit टूल हमारा वी कैन यूज प्लानिंग के टाइम में यूज हो सकता है और डिजाइनिंग के टाइम में यूज हो सकता है. ठीक है, सो इट कैन बी यूज्ड इन इन द प्लानिंग स्टेज और मे बी डिजाइनिंग स्टेज. सो देर आर अदर टूल्स एज वेल. टेक्ला है, टेक्ला में हम मॉडल करते हैं, रेविट में हम मॉडल करते हैं. ठीक है, वी ऑल्सो डू सम एनालिसिस, HVAC एनालिसिस, हीट वेंटिंग, हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो होता है ना, HVAC सेंट्रलाइज्ड एयर सिस्टम. We can design our buildings, sustainable buildings we can design with the help of Revit. हम इसमें एनर्जी परफॉर्मेंस एनालिसिस रन कर सकते हैं, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ MEP. वो हमारे स्कोप में नहीं है, बिकॉज वी आर सिविल इंजीनियर्स. दैट इज अ वर्क ऑफ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग गाइस. MEP का स्कोप में है. ठीक है, सो Revit इज अ मॉडलिंग टूल एज वेल एज एनालिसिस टूल. एनालिसिस कौन सा, स्ट्रक्चरल एनालिसिस नहीं, बट कौन सा, MEP analysis, like heat ventilation analysis, energy performance analysis. Okay, so Revit is not BIM. Revit is a part of BIM, or you can say Revit is a tool which we use in BIM process. Understand? क्लियर है ये बात, हमेशा याद रखोगे. यस सर, यस सर। ठीक है, project setup. Let's say how you, I mean, you want to set up a project, or you are very new, or you have assigned a project. How you can set up a project in Revit?
Setting up a new project, 10 minutes. Set up project units, 10 minutes. Create levels, 20 minutes. Set up grids, 20 minutes. Right? And then you can practice. I'll take the questions in the end if you have any. Start a new project. Click new on the home screen. Select an appropriate template, architectural, structural. Explain the importance of templates for set up project units. Okay, let me go to Revit again. Now, I was talking about this models. If I'm saying models or project, one and the same thing. ठीक है? फैमिली से रिलेटेड वन मोर थिंग. फैमिली का यूज क्या होता है? फैमिली का यूज ये होता है, लेट्स से यू आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट. आप कोई आर्किटेक्चरल ड्राइंग बना रहे हैं, मे बी यू आर वर्किंग ऑन एन इंटीरियर डिजाइन, जैसा अनुराग ने बोला है ना. तो फैमिलीज को हम लोड कर लेते हैं, मतलब हम कॉल कर लेते हैं. For example, I'm working on an interior drawing. Okay, interior design. Now I need a table. I'll go to the load family. I want to use this particular table. So I can use this particular table. I will go to the family and then load this family into the project. वो directly अपने आप load होके आ जाता है option से. I will show you. Now we do not have any previous projects, so I will start with a new one. ठीक है? मैं new projects जैसे start करता हूँ day one से. The moment you click on this new project, it will ask you which type of template you want to use. ठीक है? Template से समझ. Do you know what do you mean by template? Do you know? Do you have some idea about template? Template क्या होते हैं? Any one of you? नो सर. No idea? Aldrin? सर बोल सकते हैं कि टेम्पलेट जैसे हम क्या किस टेम्पलेट पे काम करना चाह रहे थे, कंस्ट्रक्शन सर हो गया टेम्पलेट या फिर पहले से बना मैकेनिकल का बनाया रह है. गया. Aldrin is close to both of you are a वो bit closer to सैंपल, that. हाँ Hmm. सैंपल की तरह ही यूज कर सकते हैं टेम्पलेट. Correct. So template का मतलब here. Template is a kind of every company, every organization, or you can say, in fact, it varies from person to person. Let's say you both of you are working. तो हो सकता है एल्ड्रिन का काम करने का तरीका अलग है, मतलब उसको हो सकता है फॉन्ट साइज 2.5 mm का बेस्ट लगता हो, वो अपनी ड्राइंग में 2.5 यूज करता है. अनुराग ऑन द अदर हैंड, उसको लगता है कि 2 mm इज ओके. ठीक है? सो सबका अपना अपना तरीका होता है और सब अपने अपने तरीके से काम करते हैं. ठीक है? कंपनीज के अपने टाइटल ब्लॉक्स होते हैं. ठीक है? उसको कितना हाइट, कितना लेंथ, what would be the text size. Okay, on the right side we will be keeping notes or general notes. On the left hand side we will not be keeping anything. So वो ड्राइंग का जो टेम्पलेट देखने को आता है ना, सैम्पल काइंड ऑफ थिंग. ठीक है ना? दैट इज नोन एज टेम्पलेट. तो हर कंपनी का, हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने टेम्पलेट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये वाला देखो यहाँ पर, जस्ट पे अटेंशन हियर. ये जो शीट दिख रहा है, दिस इज काइंड ऑफ अ टेम्पलेट. ठीक है? ये एक टेम्पलेट है किसी कंपनी का. नीचे में you will find how many companies are involved. Here do you have some pictures of the project. Here is the 3D picture of the project. Here is the name of the companies involved. यहाँ पर कुछ names notes लिखे हुए हैं. यहाँ पर की प्लान है. So this is a kind of template. Now, why we have construction template, architectural template, structural template, mechanical systems template, electrical. So for example, you are a mechanical engineer, you want to work with HVAC and all, so you are supposed to take this mechanical template. Okay, you are not supposed to take construction or structural template, right? जितने भी ये ऑटो डिफाइंड, आई मीन लाइक ऑलरेडी अवेलेबल टेम्पलेट्स हैं, दीज आर बेसिकली फॉर एग्जांपल यू आर एन आर्किटेक्ट. अब आर्किटेक्ट का जब काम करना है तो यू शुड हैव आर्किटेक्ट वाले टूल्स ना. आपके पास कौन से टूल्स होने चाहिए? आर्किटेक्ट वाले टूल होने चाहिए. तो व्हेन यू सेलेक्ट दिस आर्किटेक्चर टेम्पलेट, यू विल फाइंड आर्किटेक्चरल टूल्स. उसकी जो सेटिंग है पूरी अंदर की,
पूरा जो वर्किंग स्पेस है, जो अंदर के लाइक रिबन है और प्रॉपर्टीज पैलेट है, प्रोजेक्ट ब्राउजर है, वो सब सेटिंग्स आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से सेट की गई हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। और प्लम्बिंग, फॉर एग्जांपल यू आर अ प्लम्बर, सो आपको प्लम्बर से रिलेटेड टूल्स चाहिए होंगे, अंदर उसकी सेटिंग्स शीट्स की वैसी चाहिए होगी, तो इस वजह से उसको अलग टेम्पलेट, सो दैट यू विल बी यूजिंग दोज टूल्स फ्रीक्वेंटली, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आई शो यू। अभी इतना समझो कि फॉर एग्जांपल अभी एज अ सिविल इंजीनियर वी वांट टू यूज स्ट्रक्चरल टेम्पलेट। ठीक है, स्ट्रक्चरल टेम्पलेट अगर मैं ओके करता हूँ तो इट शुड बी प्रोजेक्ट। ठीक है, स्ट्रक्चरल टेम्पलेट ब्राउज नहीं करना है हमें। अगर हमारा कोई अपना पर्सनल लाइक यू फॉर एग्जांपल आपने अपना कोई अलग से टेम्पलेट क्रिएट किया हुआ है, आप यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं टेम्पलेट, बट वो जनरली नहीं करते हैं, जो अवेलेबल है उसी को यूज करते हैं। ठीक है, तो आप ब्राउज करके अपना भी यूज कर सकते हैं, बट as of now we are using structural template. I have chosen structural template. I'll show you the difference. Just give me 1 minute. Yes, Aldrin and Anurag. So now I'll explain you about the template. So in each and every template, you will find this ribbon, the top ribbon will almost same, right? Properties palette will always remain same. But but you see project browser here, यहाँ पर you will find some difference. Abhi, I have chosen structural template. So level one analytical, level two analytical model, north, south, east, elevation, schedules. These things will remain same. Now I am going to open another template and I'll show you the difference. New construction template, let's say, or maybe architecture systems template, let's say. See, this project browser has changed now. Can you see here electrical lighting, floor plans, lighting 0, lighting 1? यस सर। So this is basically predefined templates are there. So that अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियर है तो उसको इन चीजों पर अपना टाइम जाया ना करना पड़े, अपना टाइम खर्च ना करना पड़े, वो फटाफट फटाफट। अब क्योंकि बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट मैकेनिकल, तो अब मैकेनिकल का हमें ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है। एचवीएसी के अंदर फ्लोर प्लान्स हैं, 0 लेवल प्लान है, लेवल 1 प्लान है, सीलिंग प्लान्स है, 3D व्यूज है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एलिवेशन है। प्लम्बिंग के अंदर यहाँ पर देखो प्लम्बिंग है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, तीनों डोमेन यहाँ पर है। हाउएवर इफ यू टॉक अबाउट स्ट्रक्चर, यहाँ पर इतना ज्यादा होता ही नहीं है, हमें तो क्या सिर्फ प्लान चाहिए होते हैं स्ट्रक्चर, यू नो लाइक आर्किटेक्चरल प्लान्स होते हैं, इसी तरीके से स्ट्रक्चर प्लान्स होते हैं, बट यहाँ पर देखो एनालिटिकल है। दैट मीन्स आपने अगर मॉडल एनालाइज किया है तो वो मॉडल भी एनालाइज करके यहाँ पर देख सकते हैं आप, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में या इसी। लेवल 1 लेवल 2 सिंपल है, और यहाँ पे एलिवेशन है, 3D व्यू है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वेयर एज इन एचवीएसी देखो पूरा टेम्पलेट अलग है। तो ये दीज आर द डिफरेंसेस। करेक्ट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। I'm just closing mechanical template and I'm since we are civil engineers now, so we will be working with a structural plan.
आप कोई भी यूज कर सकते हो, इट्स नॉट कंपल्सरी। लाइक अगर आपको अपने घर का कोई डिजाइन बनाना है, छोटा मोटा किसी का प्लान बनाना है, सो यू कैन यूज आर्किटेक्चरल टेम्पलेट एज वेल, कोई इशू नहीं है उसमें, यू कैन यूज दिस एज वेल। The only thing is you should have the understanding how to use. Now see, here we have level 0, level 1. ठीक है, all right. So these are my this is my ribbon, top ribbon. ठीक है, यहाँ पर आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चरल, स्टील, प्रीकास्ट, सिस्टम्स हम बोलते हैं प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल को। ठीक है, whenever you listen this, I mean you hear this term systems, that means services or MEP. Insert means if you want to link CAD or any other drawing or maybe PDF. Annotate means settings, dimension line, radial distance, spot elevation. You want to provide any spot elevation and all text. Analyze, we will not be going to analyze because this is not a kind of analysis software. मैंने बताया था पहले भी। और होता है तो वो क्या कहते हैं, एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन वगैरह करते हैं एमईपी वाले। ठीक है, हम लोग रूट एनालिसिस और ये स्ट्रक्चरल एनालिसिस नहीं करते इसमें। ठीक है, तो वी विल नॉट बी टचिंग दिस वाला, दिस टैब, मासिंग एंड साइट। ठीक है, ये वाला हम देख लेंगे, टोपो सॉलिड को। कोलैबोरेट का भी यहाँ पर ज्यादा यूज नहीं है बिकॉज दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द क्लाउड। जब आप क्लाउड में कनेक्ट होते हैं ना एक दूसरे से रियल टाइम में, या फिर अपने लोकल नेटवर्क में कंपनी के अंदर, देन वी यूज दिस कोलैबोरेशन। ठीक है, view this will see the 3D views, sections, call out, right, thin lines, thick lines, schedules, plan views, how to create plan views and all. So ये सब चीजें हम देखेंगे। मैनेज में will see project parameter, definition of project parameters, additional setting में, and inquiry, है ना, select by id, कोई एलिमेंट हमें सेलेक्ट करना है, and then we want to see it. Or what is it, modify is just like kind of Autodesk, AutoCAD, AutoCAD, what I would say, these are the tools basically, जैसे हम उसमें करते हैं ना, move command, align command, copy, rotate, offset, mirror, trim, extend, okay, split, scale, array, trim, extend, single element, multiple elements, अनपिन पिन करना उसको, मेजरमेंट, राइट, कट जॉइन करना, ज्योमेट्री को कट करना, जॉइन करना। सो दीज आर द टूल्स, बेसिकली ड्रॉ काइंड ऑफ टूल्स व्हाट वी हैव इन AutoCAD. It is kind of AutoCAD mode, right? So architecture, I mean, again I'm going to architecture now. If you see here, I told you in the earlier lecture, this is our workspace जो सेंटर में होता है, ये हमारा प्रोजेक्ट ब्राउजर होता है, एंड दिस इज properties palette, right? You can always arrange these settings like अगर मुझे यहाँ नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पर लाके फिट कर सकता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पर भी हो जाता है ये। और कुछ लोग इसको छोटा करके दोनों एक साइड भी यूज करना चाहते हैं, करते हैं, आई मीन कुछ लोगों को आदत होती है, आई मीन इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर वर्किंग स्टाइल। सम पीपल यूज प्रॉपर्टीज पैलेट ऑन द राइट हैंड साइड, यहाँ पर करते हैं। ठीक है, you can pin here and there, but I prefer on this side, right? मेरी आदत है प्रॉपर्टीज पैलेट लेफ्ट साइड में और प्रोजेक्ट ब्राउजर ऑन द राइट साइड। ठीक है, अगर आपको वर्किंग स्पेस, इफ यू वांट मोर वर्किंग स्पेस, तो दोनों को आप इधर अलाइन कर सकते हो, लेफ्ट में या राइट में। ठीक है ना, सो यू विल बी हैविंग दिस मच स्पेस, लार्जर स्पेस। ओके, नाउ आई एम इन द लेवल 2 प्लान। अगर आपको लेवल 1 में जाना है तो यू विल गो हियर इन द प्रोजेक्ट ब्राउजर and click on level 1, right? Level 1, level 2. Now I'll switch back to the PPT. Click new on the home screen, select an appropriate template, हमने choose कर लिया है। ठीक है ना,
टेम्पलेट्स का इंपॉर्टेंस आई हैव ऑलरेडी, मैंने आपको बता दिया कि वो प्रीलोडेड जो सेटिंग्स होती हैं उसकी वजह से देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टेम्पलेट्स. नाउ मैनेज select units and length meters areas. Okay. I'm sorry. The very first thing when you are going to start a project, okay, so you need to go to the manage, okay, manage tab. You people are with me, right? Anurag, Alrin, Navid has joined, I think. यस सर. यस सर. Wherever you feel that you are not getting it, just let me know. I will explain it. I'll repeat it. ठीक है. Now you have chosen the template as well. अब आपको काम start करना है. Now you are just about to start the work. ठीक है. The very first thing, सबसे पहले you have to go to the manage tab, and here you will find some settings. What are those settings? Project parameters, transfer project state. These are shared parameters, global parameters, project units. Okay. And one more thing you will find here. Where are the units information? Project information. Where is the project? Yeah. This is the project information. This tab is the settings tab. Okay. Before starting a project, you have to change some settings or you have to provide some information. Go to the project information. Okay. This is something related to the project. Organization name. Your organization name. For example, AECOM. Organization description, EPC company, let's say, or architectural engineering design company, AEC company, right? Building name, uh, service bay, right? Author, Aldrin, yeah, Anurag, anyone, okay? Anurag. IFC parameter is not of our use, ठीक है? Don't worry about this. IFC मैंने आपको बताया था IFC क्या होता है, इंडस्ट्री फाउंडेशन क्लासेस. कोई अगर रैविट यूज कर रहा है एंड क्लाइंट इज यूजिंग आर्किकैड तो उसको फाइल चेक करने में प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से हम आईएफसी एक्सटेंशन में अपनी फाइल को सेव करते हैं आईएफसी फॉर्मेट में, सो दैट क्लाइंट कैन चेक दैट फाइल. ओके. फर्ज करिए एल्ड्रिन इज वर्किंग विद रैविट एंड अनुराग इज वर्किंग विद आर्किकैड एंड मैं क्लाइंट हूँ और मुझे input, I mean, I need the project work which you have completed. So I will have to buy two types of software, ArchiCAD or Revit. तो it will be expensive for me. ठीक है ना, और मुझे उन दोनों को चलाने के लिए मैन पावर भी चाहिए होगी. तो what you will do is you will both of you will save your files as an IFC format. ठीक है ना, एक्सपोर्ट करेंगे और वो मुझे सेंड कर देंगे. IFC आई कैन ओपन इजीली. सो उससे रिलेटेड हमें कुछ नहीं करना है, वो एक अलग प्रोजेक्ट है, चैप्टर है. नोट देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट दैट. नाउ प्रोजेक्ट इशू डेट, राइट? प्रोजेक्ट इशू डेट, फॉर एग्जांपल टुडे इज 24/05/2025. प्रोजेक्ट स्टेटस, किक ऑफ मीटिंग हो गई है. ठीक है. किक ऑफ मीटिंग स्टेज में क्लाइंट नेम, बोलो क्लाइंट नेम आपके. आरबीएनएल. यस सर. प्रोजेक्ट स्टेटस एड्रेस उत्तराखंड. उत्तराखंड. यस.
उत्तराखंड। ठीक है। प्रोजेक्ट नेम ऋषिकेश तो कौन पड़ेगा? ऋषिकेश टू कौन पड़ेगा? ब्रॉड गेज लाइन। या कर्णप्रयाग। ओके ठीक है। प्रोजेक्ट नंबर में भी लेट्स से 00। ओके दिस इज द प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन जो आप दे देंगे स्टार्टिंग में। ऑल राइट, आई एम प्रेसिंग ओके। So project information, how did I go to project information? I was in architectural tab, मैंने I went to manage tab, सबसे पहला काम विंडो ओपन करते ही I went to the project information and I provided the information। ठीक है। अगर मुझे और इंफॉर्मेशन इसमें ऐड करनी है तो वो एक अलग प्रोसेस है, उसमें हम शेयर्ड पैरामीटर क्रिएट करते हैं and वो शेयर्ड पैरामीटर हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो डुएबल। बट वो अभी आपके स्कोप में नहीं है। टाइम और सारी चीजों को देखते हुए विल सी के वेदर इट इज रिक्वायर्ड और नॉट, बिकॉज वो थोड़ी एडवांस लेवल की चीज है। ठीक है। वी विल गेट कंफ्यूज्ड। प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन आई हैव प्रोवाइडेड नाउ। प्रोजेक्ट यूनिट्स, सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, दीज आर द प्रोजेक्ट यूनिट्स। आप किस यूनिट पर काम करना चाहते हैं? डिस्टेंस, distance is your centimeters, length is in mm. You want to change to meters, feet, inches, okay, US survey feet, fractional inches, inches, feet, decimeters, centimeters, meters, millimeters. Generally, we work with millimeters, right? राउंडिंग ऑफ कितने दूर तक करना चाहते हैं? 0 डेसिमल प्लेसेस, 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस, कस्टम। ओके। As of now, I'm just keeping as by by default 0 decimal places, millimeters, unit symbol mm. You want to keep the unit symbol or not? नहीं रखना है तो none और रखना है तो mm। ठीक है। I'm using by default settings. I'm not changing any. For example, you want to change the slope, you want to change the unit of speed as well, time, volume, currency, anything, angle, area, you can change from here. As of now, I'm not changing anything, keeping default units. Okay. Now, again, create levels. Okay, I'll show you how to create levels and then grids and then project information we are done with. Okay. Now, another important thing is when I use my mouse and I use my, you know, wheel mouse button here and there, I mean, to and fro. So you see, these elevation views are changing. That means zoom in, zoom out, zoom in, Yes, zoom sir. out, right? With the help of Mouse. माउस व्हील बटन। Mouse is working. जो माउस व्हील होता है ना, उसको आगे पीछे करेंगे तो यू कैन जूम इन जूम आउट विद द हेल्प ऑफ दैट, Okay. राइट? अब इसको ध्यान से देखिए, इस पे लिखा है वेस्ट, राइट? दैट मीन्स दिस इज द वेस्ट एलिवेशन, दिस इज ईस्ट एलिवेशन, दिस इज नॉर्थ। यू अंडरस्टैंड? साउथ ईस्ट वेस्ट एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब समझते हैं? यहाँ पर खड़े हैं आप और इस तरफ देख रहे हैं और आपकी बिल्डिंग यहाँ पर कहीं पर एग्जिस्ट करती है, फॉर एग्जाम्पल। सो Okay. इफ यू वांट टू सी, आपका कोई भी प्रोजेक्ट है, आई मीन योर प्रोजेक्ट इज हियर, कुछ भी है वो, एंड यू कैन मूव दीज एज वेल। आप इसको आगे पीछे करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अभी आपका प्रोजेक्ट मान लीजिए बहुत बड़ा है, ठीक है ना? यू कांट एकोमोडेट इन दिस एरिया, सो आप इनको आगे पीछे कर सकते हैं ऐसे करके, राइट? Okay. So for example, I'll go to architecture tab and then we'll show you some wall work, then only you can appreciate this. मैं आर्किटेक्चर टैब में गया, वहां से मैंने वॉल सेलेक्ट करी और वॉल्स मेरे पास इतने टाइप्स की वॉल्स हैं, ठीक है ना?
मैं जेनरिक वॉल लेकर अपना काम शुरू करता हूँ। मैंने वॉल्स क्रिएट किए हैं बट ये वॉल्स मुझे दिख नहीं रही हैं। दिस इज बिकॉज दी व्यू सेटिंग। ठीक है, मैं 3D व्यू में जाता हूँ। ऊपर देखो 3D व्यू का सिंबल है यहाँ पर, सबसे ऊपर। ठीक है, और 3D व्यू में भी मुझे ये नहीं दिख रही है। दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग। दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द VG। गो टू 3D। इट इज गिविंग मी सम वार्निंग। ये कह रहा है none of the created elements are visible in structure plan level 1. Okay, you may want to check the active view, its parameters and visibility settings as well as any plan regions and their settings. ठीक है, मैं यहाँ पर वॉल क्रिएट कर रहा हूँ लेकिन मुझे वॉल दिख नहीं रही है। ठीक है, किसी को मतलब आपको भी नहीं दिख रही है। तो ये बिकॉज ऑफ सेटिंग्स, कोई सेटिंग्स चेंज है, इस वजह से मुझे नहीं दिख रही है। आई विल गो टू ईस्ट व्यू, यहाँ पर भी मुझे नहीं दिख रही है। ठीक है, नॉर्थ व्यू, यहाँ पर भी विजिबल नहीं है वो। ठीक है, साउथ व्यू यहाँ पर भी नहीं दिख रही है। वेस्ट व्यू यहाँ पर भी नहीं दिख रही है। दैट मीन्स आई नीड टू चेक सम सेटिंग्स। वो सेटिंग्स क्या होंगी? 3D व्यू में मैं जाता हूँ। जनरली जो चीज हमें नहीं दिखती है तो हम 3D व्यू में जाके चेक करते हैं, वो दिख जाती है। बट हियर इट इज नॉट विजिबल, तो आई नीड टू चेक द सेटिंग्स। सेटिंग्स क्या है? अभी मैं आपको जस्ट एक, अभी डोंट वरी अबाउट दिस, ये जो फंक्शन मैं यूज कर रहा हूँ आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं। बाय द टाइम यू विल कम टू नो। जैसे मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा था बट वॉल ही विजिबल नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चेक द थिंग्स पहले। यहाँ पर वॉल मैस MEP, जस्ट वन सेकेंड। साइट और स्ट्रक्चरल, structural area, structural frame, back, structural path, bar, structural stiffness, stresses, walls चेक किया हुआ है। Still I can't see the walls. Why is that? यहाँ पर भी visible नहीं है।
लेवल 1 अगेन अगर मैं एक वॉल लेता हूँ, स्ट्रक्चर वॉल, और फॉर एग्जांपल ठीक है, कैन यू सी द वॉल? हेलो, यस सर। वॉल दिख यस, रहा है? यस। ये वॉल मैंने बनाया, ठीक है। अब यू वांट टू सी इट इन द 3D, ये 3D में दिख रहा है मेरे को, ओके। और आई गो टू ईस्ट एलिवेशन, ठीक है। ईस्ट एलिवेशन में ऐसा दिखेगा ये। रिमेम्बर मैंने आपको बताया था कि द थिंग इज दैट, इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप 2D में यू वर्क एज ए 2D, बट एक्चुअल में वो इट क्रिएट्स योर 3D एज वेल एट द सेम टाइम, ठीक है। ये वॉल है, मान लीजिए दिस इज अ काइंड ऑफ यू हैव क्रिएटेड दिस वॉल टाइप। आपने सिर्फ क्या किया, जस्ट लाइक योर ऑटो कैड, आपने, अगेन आई एम शोइंग यू, स्ट्रक्चर वॉल में आप गए एंड आप ऐसा कुछ लाइन बना रहे थे ऑटो कैड में, जस्ट लाइक योर ऑटो कैड, टाइम उतना ही लग रहा है, ठीक है, बट इट इज क्रिएटिंग योर 3D एट द सेम टाइम, ठीक है। वी वर टॉकिंग अबाउट दीज एलिवेशन व्यूज, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो अगर अगर मैं ईस्ट में देखना चाहता हूँ, आई आई जस्ट वांट टू, आई मीन आई एम स्टैंडिंग इन द ईस्ट एलिवेशन, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ एंड आई वांट टू लुक एट माय बिल्डिंग, तो जितना भी व्यू इधर का होगा दैट विल कम अंडर ईस्ट एलिवेशन, ठीक है। ईस्ट से मुझे ऐसा दिखेगा बहुत। टू इलेबोरेट दिस, फॉर एग्जांपल मैं इसको डिलीट करता हूँ एंड आई विल अगेन गो टू ईस्ट एलिवेशन। अब देखो मुझे दो वॉल दिख रहे हैं, ये आगे वाला छोटा वाला दिख रहा है, दिस इज छोटा वाला, एंड पीछे वाला उसके पीछे का ये वाला भी दिख रहा है, अंडरस्टैंड? यस, ये जब आप यहाँ पर खड़े हैं, दिस इज ईस्ट एलिवेशन, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से आपको पहले छोटा वॉल दिख रहा है एंड देन पीछे का वो वाला वॉल भी दिख रहा है, दिस इज एलिवेशन बेसिकली। वेयर एज वेयर एज आप जब वेस्ट में खड़े होंगे तो वेस्ट एलिवेशन में यहाँ से जाइए प्रोजेक्ट ब्राउजर से, तो आपको सिर्फ एक बड़ी वॉल दिखेगी, ठीक है। उसके पीछे डॉटेड लाइन दिखेगा क्योंकि पीछे भी एक वॉल है। सो दिस इज हाउ यू यूज एलिवेशन व्यूज, राइट। इनका यूज होता है, आई मीन these आर वेरी यूजफुल, and you can also add your customized views as well, I mean elevation views as well. By default these four elevations have been given in the Revit: east, west, south, right, north, and you can use your elevations as well, correct. This was the geometry basically, right. So मैंने कुछ नहीं किया था, I went to the structure, I mean architecture tab, wall अब मैंने ली थी यहाँ से and I draw the wall, ठीक है। This is all about elevation. Project unit we have done, project information we have done. Now what else? I'll show you the how to create the elevations and grids. Another important thing, कभी भी आप अपना प्रोजेक्ट शुरू करते हैं एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर, एज एन आर्किटेक्ट, सो यू हैव टू वर्क विद द ग्रिड्स एंड एलिवेशंस, ठीक है ना। ग्रिड्स और एलिवेशन का सिग्निफिकेंस क्या होता है, कोऑर्डिनेशन में बहुत काम आता है, ठीक है ना। आप साइट पर काम कर रहे हैं एंड मैं यहाँ से आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, कोई इशू आ रहा है साइट के ऊपर, सो वी विल टॉक इन रेफरेंस टू द ग्रिड्स, कि सर इस ग्रिड पर देखिए ये वाला कॉलम मैच नहीं कर रहा है, सर इस ग्रिड पर देखिए ये वाला बीम मिसिंग है, या फिर इस पर्टिकुलर ग्रिड पर दिस एंड दिस पर्टिकुलर ग्रिड वी आर नॉट गेटिंग द ऑफसेट व्हाटएवर। So how you gonna create the grids? First of all, when you start your work,
go to the architectural tab or structural tab as well. You have data on the right hand side. See, grid tab is there. I will click grid and I will start drawing grids. 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे मैंने ग्रिड ड्रॉ कर ली, जस्ट लाइक लेफ्ट टू राइट माउस क्लिक बटन से। अब देखो बाय डिफॉल्ट इट इज शोइंग 1 2 3 4 नंबर्स। ठीक है, 1 2 3 4 जितने भी नंबर्स, जितने भी ग्रिड्स, लेट्स से आई एम हैविंग 20 grids, so it will create 20 grids by this. Now I want to create the vertical grids as well, ऐसे, sorry, top to bottom, bottom to top. Okay, now it is giving me 5 number, I mean ये chronology follow करेगा, ठीक है ना। It will start from 1 and will go up to कितना भी नंबर। बट जनरली क्या होता है कि एक साइड में हम न्यूमेरिक वैल्यूज रखते हैं एंड ऑन द अदर साइड वी हैव अल्फाबेटिक वैल्यूज। एल्ड्रिन और अनुराग, देखा ये चीज आपने ग्रिड्स में? ग्रिड्स के बारे में डू यू हैव आइडिया? नो। ग्रिड्स के बारे में आइडिया नहीं है यस वैसे? सर। एल्ड्रिन को होगा, बट क्योंकि उन्होंने आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स पे काम किया है, अनुराग को इसलिए नहीं होगा क्योंकि वाई बिकॉज जो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स की ड्राइंग्स होती है ना, उसमें जनरली आई मीन सेल्डम भी यूज ग्रिड्स, उसमें जनरली नहीं होती है ना। बट एल्ड्रिन, सिंस यू हैव वर्कड इन कॉलोनी एंड अदर आर्किटेक्चरल स्टफ, सो दैट इज व्हाई यू नो। सो कुछ नहीं, ग्रिड्स बेसिकली जब कोई हम बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग्स वर्क्स में ज्यादा यूज होती हैं, ठीक है ना। सर ये इक्वल डिस्टेंस में बांटने के लिए कैसे करेगा? इक्वल डिस्टेंस में बांटने के लिए कर सकते हैं, देखो इस फिर पर क्लिक करो, इसकी डायमेंशन आती है, वहां पर क्लिक करो और उसको एडिट करो। लेट्स से यू वांट टू कीप इट एज 6000। ओके। सिमिलरली इस पर क्लिक करो, इसको 6000 कर दो। ठीक है, ऐसे यू कैन एडिट, इट इज वेरी इजी। ठीक। ठीक है, इसको again you want to keep at 7000 for example, so you can add it easily. Okay, now 1 2 3 4 5, so generally कोई भी एक साइड में, I mean if for example I am using 1 2 3 as the horizontal, this is my horizontal grid, Anurag, these are horizontal grids. Okay, if I am using 1 2 3 in horizontal grids, so I will I'll be using ABCD as in vertical grids. ठीक है, कैसे चेंज करना है? बाय डिफॉल्ट इफ यू रिमेंबर व्हेन आई क्रिएटेड अ वर्टिकल ग्रिड, इट वाज शोइंग मी 5 नंबर यहाँ पर, ठीक है ना। आई क्लिक्ड ओवर देयर, मैंने वहां पर क्लिक किया और आई जस्ट चेंज इट टू ए। ठीक है, मैंने उसको ए बना दिया। अब जितनी भी ग्रिड्स में वर्टिकल बनाऊंगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम ए एंड ऑटोमेटिकली take A as the starting point and will be creating B, C, D, E, F, G, H, I, J. Again, I'll go to grid. Okay. And then again, I'll create another grid from bottom to top. Sorry. See, now it is taken it has taken B as the second grid. Again, I'll start another grid and create another grid. It will make it as C, D. ठीक है, तो जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है बेसिकली, when you start creating your grids, it will start from 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 by default. ठीक है, so once you create your horizontal grids, let's say you have 10 horizontal grids and you are going to start vertical grids, so it will start your vertical grid as, I mean start from 11. It will not start from A B C D. It is you who has to tell Revit के मुझे अब ABCD से स्टार्ट करना है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी, आई मीन इट इज वाइस वर्सा एज वेल, आप यहाँ पर 1 2 3 दें, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल में यू कैन चेंज ABCD एज वेल, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। बट वो जब स्टार्ट आप करेंगे
दैट डिपेंड्स ऑन यू, स्टार्टिंग में ही आपको सेटिंग्स करने हैं, ठीक है। क्लियर है ग्रिड कैसे बनाना है? कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। डोंट वरी, आई एम जस्ट हाँ। डिलीटिंग दिस, डिलीटिंग दिस, एंड आई विल गो टू ग्रिड। पहले मान लीजिए मैंने वर्टिकल बनाया, ठीक है। अब देखो एक प्रोजेक्ट में मैं डी तक क्रिएट कर चुका हूं, तो अब इट विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम ए, इट विल ओनली स्टार्ट फ्रॉम ई, ठीक है। सो यू शुड बी वेरी मच केयरफुल व्हाइल स्टार्टिंग, ठीक है। ई एफ जी एच आई जे अब ऐसे चलेगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम, बिकॉज इसके सिस्टम में यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अप टू ए बी सी डी। हॉरिजॉन्टल में ऐसे, ठीक है। एच आया यहाँ पर, आई नीड टू चेंज द नंबर, वन नहीं लेगा वो उसके आगे, ठीक है। अब मैंने वन चेंज कर दिया, तो अभी इट विल स्टार्ट फ्रॉम टू, थ्री, सिंपल। ऐसा भी हो सकता है समटाइम्स यू नीड टू क्रिएट टेढ़ी, लाइक थोड़ा स्लोपी और मे बी टेढ़ा ग्रिड, यू कैन ऑल्सो क्रिएट दैट टेढ़ा ग्रिड एज वेल, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं? यस और नो? यस सर। सिंपल ग्रिड बनाना, ग्रिड्स के, ग्रिड बनाने से यू विल इजिली क्रिएट योर मॉडल। You can you can easily place your columns at the intersection of grids, right? है ना, you can easily place your beams, columns, staircase. These are the reference point, basically it will give you a reference while coordination, while modeling. Now we'll create, now we'll create levels। लेवल से मान लीजिए आपको कोई बिल्डिंग है, वो आपकी G+4 स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है। G+5 स्टोरी बिल्डिंग है, G+4 है, G+2 है, वेर एवर। सो यू हैव टू क्रिएट लेवल्स फॉर देम। लेवल्स मतलब एलिवेशन, फर्स्ट एलिवेशन 3 मीटर, सेकेंड एलिवेशन 3.2 मीटर, 5.2 मीटर या 6.2 मीटर, वट एवर। सो यू नीड टू क्रिएट डिफरेंट लेवल्स। जितने आपके लेवल्स होंगे उतने ही आपकी फ्लोर प्लान होंगे, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल G+5 बिल्डिंग यू हैव टू क्रिएट, यू हैव टू मॉडल, और उसको एनालाइज करना है। तो you may appreciate the fact that each and every floor plan has different interior planning, interior designing। 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो अब ऐसा तो नहीं है कि जो इंटीरियर अनुराग को पसंद आया, द सेम वुड बी लाइक्ड बाय एल्ड्रिन। नवेद का इंटीरियर डिजाइन में भी हो सकता है नवेद थर्ड फ्लोर पे रहता है, आप सेकंड फ्लोर पे रहते हो, एल्ड्रिन जो है फोर्थ फ्लोर पे रहता है। तो उन सब की अंदर की प्लानिंग अलग अलग होगी ना, स्ट्रक्चर तो विल बी सेम, स्ट्रक्चर तो सेम ही होगा बिल्डिंग का, बट फ्लोर प्लान सबके अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है ना, मोर और लेस, ठीक है। मेजर प्लानिंग सेम होगी। अगर सेकंड फ्लोर पर जहाँ पे वॉश एरिया है, तो थर्ड फ्लोर पर भी वही होगा, फोर्थ फ्लोर पर भी वही होगा, बट अगेन इंटीरियर कुड बी डिफरेंट, ठीक है। इसलिए हमें लेवल्स बनाने होते हैं, ताकि हम हर एक लेवल पर जाकर, सो दैट वी कैन वर्क इंडिविजुअली एट ईच लेवल। बाय डिफॉल्ट कोई भी टेम्पलेट आप ओपन करेंगे, यू विल फाइंड 2 लेवल्स बाय डिफॉल्ट। स्ट्रक्चर में यू विल फाइंड लेवल 1, लेवल 2। इफ यू विल ओपन आर्किटेक्चरल टेम्पलेट, यू विल फाइंड लेवल 0, लेवल 1, ठीक है। उसके अलावा apart from that, if we want to add hundreds of levels, so we need to add from here। how to open that? सबसे पहले आपको किसी भी एक एलिवेशन में जाना है, ठीक है। जैसे आई एम गोइंग टू ईस्ट एलिवेशन, राइट, यू सी लेवल 1, लेवल 2 आर देयर, बाय डिफॉल्ट दीज आर गिवन, ठीक है। नाउ आई हैव टू क्रिएट सम मोर लेवल्स। मान लीजिए 4-5 लेवल्स मुझे बनाने हैं। आई विल गो टू आर्किटेक्चर अगेन। आर्किटेक्चर टैब में जब जाएंगे, तो ऑन द राइट हैंड साइड यू विल फाइंड डाटम, जहां एक्चुअली से सर, अपने, यस। सर एक्चुअली मेरे को जाना है, मैं ऑफिस। अच्छा, बस 5 मिनट, 5 मिनट दे दो, इसको खत्म कर दूं। ठीक है सर। 5 मिनट ज्यादा नहीं, बस। देखो, जहां से मैंने ग्रिड बनाया, ग्रिड से जस्ट ऑन द, जस्ट अबव द ग्रिड, आई हैव लेवल। लेवल सिलेक्ट करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है, देखो लेफ्ट टू राइट ऐसे बनाते चले जाना है, ठीक है।
ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, बस आपको प्रैक्टिस करना है जस्ट। और फॉर एग्जांपल आप इसकी हाइट चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पर डबल क्लिक करिए एंड मेक इट लाइक 6,000। ठीक है, 6,000 इट हैज टेकन फ्रॉम, ओ ओके, इट हैज टेकन फ्रॉम देयर, नो वरीज। ये मीटर में है ना, मैंने वो की वैल्यू डाल दी, सो इसको मुझे 6 करना है बेसिकली। ठीक है, ऐसे आप इसको चेंज कर सकते हैं, 6 एंड देन 9। हो रहा है चेंज? एल्ड्रिन अनुराग, दिस इज द लास्ट यस सर। टॉपिक यस सर, हो गया फॉर सर। टुडे। हाँ, तो ग्रिड और एलिवेशन आपको, नाउ योर होमवर्क इज यू हैव टू शो मी ग्रिड्स, एलिवेशंस, प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन, प्रोजेक्ट यूनिट्स। ठीक है, ये चार चीज आप करेंगे एंड विल, आई सी यू टुमारो। ठीक ओके है, सर। ठीक है, ये ओके सर। चार चीज करो, प्रैक्टिस करो, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू। आई शेयर द रिकॉर्डिंग।